శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
చేసిన భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. నేను చెప్పిన విధముగా తిరిగి చెప్పండి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణం నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ
శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विधे विखनसे नमः. श्री गोविंद गोविंद गोविंद. श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभ करण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचल क्षेत्र निवासिनः श्री श्रीनिवास स्वामिनः ప్రీత్యర్థం మమ. అందరూ మీ గోత్రాలను స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పేరును స్మరించుకోండి. మీ యొక్క భార్య పేరు స్మరించుకోండి. మీ యొక్క పిల్లల పేర్లను మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని మీ యొక్క కోరికలను స్వామివారికి మనస్సులో విన్నవించుకోండి. చెప్పండి. మమ సహకుటుంబానాం సబాంధవానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం సత్సంతాన सौभाग्य सिद्ध्यर्थम राजद्वारे सर्वकार्य आनुकूल्य सिद्ध्यर्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष वीक्षण सिद्ध्यर्थम लोकक्षेमार्थम श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र उक्तमार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத ஸ்ரீ வெங்கடவாணனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்துறையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து அடியார்களையும் வரவேற்கின்றது. இன்று பிறந்த நாள் மங்கள திருமண நாள் என்று மகிழ்வுடன் கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அனைத்து பக்தர்களின் உயரிய மேன்மையின் பொருட்டு பண்டை நாளாலே நின் திருவருளும் பங்கையத்தாள் திருவருளும் கொண்டு நின் கோயில் சீத்து பல்படிகால் குடி குடி வழிவந்து ஆட்சியும் என்று அடியார்கள் வாழ்வாங்கு வாழையடி வாழையாக வாழ திவ்ய தம்பதிகளின் அடிபணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களை வாழ்த்தி திருக்கல்யாண உற்சவத்தை காண வரவேற்கின்றது. இப்பொழுது நாம் இவ்விடத்தில் திருமலை அப்பனை
ஸ்ரீதேவி பூதேவி முன்னம் அவர்களை சேவித்துக் கொண்டு திருமலையப்பனையும் சேவிக்க இருக்கின்றோம். அர்ச்சக சுவாமி ஸ்தல சுத்தி ஸ்ரீ விஸ்வக்சேன ஆராதனை முன்னிட்டு கொண்டு திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தொடங்கியிருக்கின்றார். தூநீர் முகில் போல் தோன்றும் நென்சுடர் கொள்வடிவும் கனிவாயும் தேநீர் கமல கண்களும் வந்து என் சிந்தை நிறைந்தவா மாநீர் வெள்ளிமலை தன்மேல் வண்கார் நீள்முகில் போல தூநீர் கடலுள் துயில்வானே எந்தாய் சொல்ல மாட்டேனே. இந்த திருவாய்மொழியில் மாயக்கூத்தா என்ற பதிகத்தில் சுவாமி நம்மாழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளது. எம்பெருமானின் அந்த திவ்யமங்கல திருமேனியின் அழகை நன்றாக அனுபவித்து சாதித்தருளியுள்ள பாசுரம் இது. இப்பாசுரத்தாலே ஸ்ரீ நம்மாழ்வார் பெருமானின் சௌக்குமாரியத்தை, அதாவது சௌக்குமாரியம் சுகுமாரம் என்று சௌக்குமாரியத்தை விவரித்தருளியுள்ளார். மேலே இவ்விடத்தில் அர்ச்சக சுவாமி விஸ்வக்சேன ஆராதனை துவங்கி இருக்கிறார். அதை சற்று சேவித்து முன்னே இந்த பாசுரத்தின் பொருளை அனுபவிப்போம். शेषाचलक्षेत्रनिवासिनः श्री श्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं लोकक्षेमार्थं क्रियमाणस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् अद्य क्रियमाण सर्वकर्मसु सर्वोपकरणद्रव्यशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याहवाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमा अवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये। ओं धारासु सप्तशुचमानशेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोऽभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि धत्तागुं शुचिरगं सुशर्माम् इदमापः शिवा शिवतमाः शान्ताः शान्ततमाः शुभाः शुभतमाः पूताः पूततमाः पुण्याः पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। ओं एतेषु तं वर्णये सहस्रं यज्ञिकाः पाशा वितताः पुरुत्राम् तेभ्यो न इन्द्रस्वितोत विष्णुरविश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्त्याम् करके पाञ्चभौतिकमावाहगामि जले सर्वतीर्थजलमावाहगामि वरुणमावाहगामि प्रचेतसमावाहगामि रक्ताम्बरमावाहगामि यादस्पतिमावाहगामि धारायां वायुमावाहगामि कूर्चे सरस्वतीमावाहगामि पुष्पे फुल्लमावाहगामि अक्षते काश्यपमावाहगामि तण्डुले रविमावाहगामि आवाहितदेवताभ्यो नमः वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। ओमाग्नेयोगस्मात् किदामहे त्वा विश्वेशदा त्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सुहृतन्निधत्ताम् प्रेष्यामधीशो विपधानामनादिः यामेशस्थान् धनितान् दधातु पद्माकारमण्डले। ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपागिनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि सूत्रवती जयासमेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं प्रकल्पयामि विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्नः वरदा भवतु। भवद्भिरनुज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वां स्वस्ति सुप्रोक्षितमस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वाधीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि। अतो देवा अवन्तु नागतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाकं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्
विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो व्रतानि वस्पशे इन्द्रस्य गत्यः सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरगः दिवि वचक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाकृवाकं सस्समिन्धते विष्णोरिगत्परमं पदं द्रविणोदात्रविणसस्तुरस्य त्रविणोदासनरस्य प्रियं सुते द्रविणोदा वीरवती मिषन्नोऽत्र विनोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णेभिः शृणुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्गित्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनोभिर्विगशेमदेवहितं यदायुः श्रुतमिन्नु शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनाम् पुत्रासो गत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीर्षुता गुर्गन्तो अदितिर्त्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अप्रवन्तो पुण्याहं कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भूः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति स्वस्तिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति रुद्ध्यास्म हव्यैर्नमसोपसत्यां मित्रं देवं मित्रधेगन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः श्रुतं जीवेम शरदः सवीराः श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं क्रियमाणं पुण्याः भगवत्यजनकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिं भवन्तो अप्रवन्तो कर्मरुध्यतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जे दधातनां महेरणागचक्षुषे यो वश्वतमोरसस्तस्य भाजगते हनः वसुरेरिवमातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्मधाम् आपूजनगधातनः ॐ पवमानस्ववच्चनः पवित्रेण विचर्षणिः यप्पोता स पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनबोधिगां पुनन्तु विश्व आगवः जातवेदः पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुकुम्रणो यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यस्कै भक्वीस्तनवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तः सधमात्येषु वयग्गुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातो वातः प्राणेनेश्रोमगो भूः द्यावा पृथिवी पगसापगोभिः ऋतावरीयज्ञगे मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रिभिः वरशिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहि मां येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रः सुनीति सह मा पुनातो सोमस्वस्त्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छंयो रावृणीमहे गातुं यज्ञायां गातुं यज्ञपतगे दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं शन्नो अस्तुत्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशि देवार्क्विदो मात्यगन्तां दक्षिणागां दिशि मासाः पितरो मात्यगन्तां प्रतीच्यां दिशि गृहा पशवो मात्यगन्तामुदीच्यां दिश्याप ओषधयो वनस्पतयो मात्यगन्तामूर्ध्वागां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मात्यगन्तामधोधराधरैर्नागेभ्यो मात्यगन्तां
अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निहितोऽस्यदन्तोः तमक्रतुं पश्यति वेदशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशयां निहिताः सप्त सप्त अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् स्यन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः पुनः पात्यर्घ्याचमनं समर्पयामि वरुणाग्नमः विश्वक्सेनाग्नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि यथासकमिधा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च விஸ்வக்சேன ஆராதனை பிறகு ஸ்தல சுத்தி, மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கு உரிய அந்த பாலிகைகளில் தீர்த்தத்தை சேர்த்து புனிதமாக இருக்கின்றார். மேலே சற்று முன்பு நாம் சேவித்த ஆழ்வாரின் பாசுரத்திற்கின் பொருள் விளக்கத்தை சற்று சேவிப்போம். தூநீர் கடலுள் துயில்வானே எந்தாய் சொல்ல மாட்டேனே என்று சாதித்த அருளிய அதன் பொருள் இப்பாசுரத்தாலே நம்மாழ்வார் பெருமானின் சௌக்குமாரியத்தை, அதாவது சுகந்தமான அழகான அனுபவிக்க தகுந்த சௌக்குமாரியம், ஒரு லாவண்யம், அதாவது மென்மையான லாவண்யம் என்று குறிப்பிடுகிறார். பக்தவசலனான பெருமானின் திருமேனிக்குள்ள குணங்களில் மிகச்சிறந்த குணம் சௌக்குமாரியம். அழகிய மணவாளனாம் நம் வெங்கடவாணனின் திருமேனி அன்றலர்ந்த மலர்களின் மலர்ச்சி போல மென்மையாக இருந்திருக்குமாம். புஷ்பஹாசன் என்ற பெருமானுக்கு ஒரு மணமிக்க திருநாமத்தை சாற்றும்படியாக உள்ள திருமேனி குணம் என்பர்கள் பூர்வர்கள். பெருமானின் திருவருளை பெற்ற அடியார்களுக்கு இவனை அனுபவிப்பது என்பதே ஒரு இனிமை. அதை இனிமையாக இருக்குமாம். எம்பெருமானுக்கு தன்னை அண்டிய பக்தர்களை காண அவனுக்கு இனிமை. அப்பேற்பட்ட எம்பெருமானை காண்பதற்கு இந்த பக்தர்களுக்கு இனிமை. இந்த சௌகுமாரியம் எனும் குணம் மணமிக்க மலர்களை அனைவரும் நாடுவதை போன்று மணமிக்க சர்வகந்தனான எம்பெருமானை அனைவராலும் சர்வரசத்தோடு அனுபவிக்கத்தக்கவனாகின்றான். ஆக இவனுடைய கருத்த திருமேனி மழை பொழியும் நிலையில் உள்ள மேகம் போன்று கண்டபோதே காண்பவருடைய துன்பங்களை அனைத்தையும் போக்கவல்லதாக இருக்கின்றது. நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு அமைதி அடைய செய்வதாக உள்ளது. ஏன்னா துக்கமெல்லாம் தீர்ந்தால் நிம்மதி பெருமூச்சுத்தானே வரும். அதை அளிப்பவன் அத்தனை சௌகுமாரியம் உடையவன், அந்த அனுபவிக்கத்தக்க குணத்தை உடையவன். ஆகவே பகவானின் திருமேனி ஒப்பற்ற ஒளிமிக்கதாக விளங்குகின்றது என்கிறார். ஏன் அத்தனை ஒளிமிக்கதாக விளங்குகின்றது? இத்துணை தன் மீது அன்பான உள்ள அன்பர்களை அடியார்களை கண்ட மாத்திரத்திலேயே அவன் திருமேனி ஒளிமிக்கதாக தீக்ஷண்யமாக அந்த திவ்ய திருமேனியில் உள்ள திவ்ய திருஷ்டிகள் அந்த பக்தர்களின் மேல் படிவதாலே இந்த திருமேனி ஒளிமிக்கதாக மாறுகின்றதாம். ஸ்ரீ பெரியவாச்சான் பிள்ளையும் தமது இந்த பாசுரத்திற்கு உள்ள விளக்கத்தில் சௌகுமாரியமாவது நாச்சியாரும் உரைக்க பார்க்க பெறாதபடி புஷ்பஹாச சுகுமாரமாய் இருக்குகிறது என்கிறார். அதாயல் ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி தேவிமார்கள் தங்களின் திருக்கண்கள் மலரவிட்டு கொண்டு ஸ்ரீ வெங்கடவாணனின் திருமேனியை சற்று உற்று நோக்கினாலேயே போரும். அதை பொறுக்காத பெருமானின் திருமேனி வாடி வதங்கி விடுவது போல ஆகிவிடுமாம். ரசமான கல்பனை இந்த ஆச்சாரியனுக்கு. என்றால் இப்படிப்பட்ட தாயாரின் திருமேனி எப்படி இவளுடைய திவ்ய திருஷ்டி பட்டாலே வாடிவிடுமான இவனுக்கு மேலே அர்ச்சக சுவாமி இந்த ஹோமகுண்டத்தில் அக்னியை வளர்த்து மேலே திருக்கல்யாணத்திற்கு உரிய அத்தனை கர்மங்களையும் செய்ய இருக்கின்றார். சற்று அனுபவித்து மேலே எம்பெருமானின் திருகுணமான சௌகுமாரியத்தை அனுபவிப்போம். எம்பெருமானுக்கு அணிவிக்க இருக்கும் இப்பொழுது அதற்கான பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் அணிவிக்க இருக்கும் கங்கணத்திற்கு உரிய கிரமத்தோடு ஆகம கிரமத்தோடு அத்தனை உபசாரங்களும் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மேலே அந்த கங்கணத்தை எம்பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்கும் கிரமத்தையும் வேத கோஷத்தையும் சற்று அனுபவிப்போம்.
स्वस्तके स्वस्तक आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अत्या स्वस्तके वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तके देवा अवन्तृभव स्वस्तके स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति बध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति बन्था मनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवाम् पुनर्तदताघ्नता जानता सङ्गमे महीं स्वस्त्यगनं तार्क्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरघ्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहत्यशो नावमिवारुहेमाम् अम्भोमुचमाङ्गिरसङ्गगं च स्वस्त्या आत्रेगं मनसा च तार्क्ष्यम् प्रगतपानिशरणं प्रपत्ये स्वस्ति संबाधेष्वभगन्नो अस्तु शुभगं शुभम् இப்பொழுது பெருமானுக்கும் பிராட்டிமார்களுக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். நம்ம அதாவது அடியார்களும் காணும்படியாக செய்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. மேலே இதை பெருமானுக்கு சாற்று பிடிக்கும் தருவாயில் அவனுடைய சௌகுமாரியத்தை சற்று அனுபவித்துக் கொண்டே இதையும் சேவிக்கலாம். இப்படி என் பிராட்டிமார்களின் நேத்திரங்களின் அந்த திருஷ்டி பெருமான் மேல் பட்டாலே சற்றே வாடி விடுமாம். அப்படி இருக்க இந்த தாயார் எப்படிப்பட்டவள் என்று அதையும் சாதித்து அருளியுள்ளார்கள். ஸ்ரீ வேங்கடவாணனின் திருமேனியை சற்று உற்று நோக்கினாலேயே அதை பொறுக்காத பெருமானின் திருமேனி வாடி வதங்கி விடுவது போல் ஆகிவிடும் இல்லையா? ஆனால் இப்படிப்பட்ட தாயாரின் திருமேனி எப்படி என்று ஸ்ரீ பராசர பட்டர் விளக்கமாக அருளி செய்துள்ளார். தாயார் தாமரை பூவில் எழுந்தருளி இருக்கும் சமயத்தில் தாயாரின் திருவடி இணைகளில் நெருப்பு பட்டது போல் துடித்து எழுந்துகிறாளாம். சற்று துடித்து போகிறாள். காரணம், தாமரை பூவில் உள்ள மகரந்த துகள்கள் அவள் திருவடி இணைகளில் சற்றே படிந்ததாம். தாயாரின் திருவடிக்கு உடனே வந்தது வினை. நெருப்பு பட்டது போல கண்டி போனதாம். உடன் இருக்கும் தோழிமார்கள் சற்றே ஆச்சரியத்துடன் தாயாரை உற்று நோக்க தாயாரின் திருமேனி முழுவதும் வாட்டம் கண்டு விட்டுதாம். அத்துணை சுகுமாரமான திருமேனி இவளுக்கு. இப்படிப்பட்ட இவளின் திவ்ய திருஷ்டி பட்டாலே இவன் உடல் அதாவது திருமேனி வாடி வதங்கி விடுவது என்றால் எப்பேற்பட்ட சுகுமாரம்! ஆகவேதான் ஆழ்வார் சுகுமாரமான திருமேனி சுகுமாரமான குணங்கள் உடையவன் என்று சாதித்தருளியுள்ளார். ஆக கவியன் ரசனை இத்துணை மென்மை. தாயார் அப்படிப்பட்டவளின் திருக்கண் கடாற்றம் சற்றே அகல விழித்து பெருமானை பார்க்க வாடிவிட்டது என்றால் பெருமான் அத்துணை சௌகுமாரியமான குணத்தோடு கூடிய திருமேனி உடையவனாம். ஏன் இத்துணை விளக்கம்? இப்படிப்பட்ட பெருமான் பக்தர்களின் துக்கத்தை கண்டு பொறுக்க மாட்டாது துக்கித்து போகிறானாம். அர்ச்சை திருமேனியிலும் சௌகுமாரியத்தின் தன்மை இதுதானாம். அந்த துக்கித்து போவதே வாடி வதங்கி விடுகிறது. பக்தர்களின் துன்பத்தை கண்டு படும் அல்லலை கண்டு கலியின் பிடியிலிருந்து அவர்களை மீட்கும்படியான அந்த குணமே இவனுக்கு மேலோங்கி இருப்பதால் சற்றே அவர்களின் துக்கத்தை கண்டாலும் இவன் உடல் மனது கண்கள் அனைத்தும் வாடி வதங்கி விடுகிறது என்பதற்காக இந்த ஆழ்வாரின் பாசுரம் மேலோட்டமான ஆழ்ந்த கருத்தாக அமைந்துள்ளது. அடியாருடைய துக்கத்தை கண்டால் பொறுக்க மாட்டாது உடனே அவளுக்கு அருளை அள்ளித்தர துடிக்கும் உள்ளத்தினன் இந்த சௌகுமாரியத்தின் எல்லை நிலமாம். இவன் உணர்ந்து அனுபவித்த பக்தர்களை இன்னிக்கும் இதற்கே சாட்சினமும். கண்டார் மயங்கும் திருமேனி உள்ளவன் கண்ணழகு உடையவன் நம் கோபால கோவிந்தன் என்று ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்தை மறுத்து பேச இவ்வுலகில் எவரும் உண்டோ? எவருக்கும் தைரியம் இல்லை. உண்மை அதுதானே. இத்தனை மலர்களை சுற்றி வண்டு திருவது போல பக்தர்கள் கூட்டங்கள் என் திருவடி நிழலை பற்றி இருக்க இந்த திருவடி தாமரையில் உள்ள அனுகிரகத்தை பெற இவரை சுற்றி சுற்றி வருகிறார்கள். அர்ச்சக சுவாமி பெருமானுக்கு கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்கும் முன்பு அனைத்து பக்தர்களையும் கண்டு வணங்கி தங்களின் பிரார்த்தனைகளை அவன் திருவடி வாரத்தில் வைக்க நமக்கு அந்த கங்கணத்தை காட்டி கொடுக்கிறார். மேலே இப்படி எப்போதும் பெருமானின் திருவடியில் பொன்மலரிட்டு சேவிக்கும் முடியாத அனைத்து பக்தர்களும் தங்களின் மனதை எண்ணங்களையே அவனின் திருநாமங்களை சொல்லும் விதத்தாலேயே அவன் திருவடி மலர்களை இட்டு பிரார்த்திக்கும்படியாக அமைந்தது என்கிறார். அடுத்தது இந்த பக்தர்களை கண்டு சேவிக்கும்படியான இந்த நிலையை ஒவ்வொரு ஆழ்வார்களும் அனுபவித்து சாதித்தருளியுள்ள மேலே அர்ச்சக சுவாமி பிராட்டிமார்களுக்கு கங்கணத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். அது அந்த நேரத்தில்
இவனுடைய அடுத்த குணத்தை சேவிப்போம். கெடும் இடராய எல்லாம் கேசவா நாளும் கொடுவினை செய்யும் கூற்றின் தமர்களும் குறுககில்லார் விடமுடை அரவில் பள்ளி விரும்பினான் சுரும்பலற்றும் தடமுடை வயல் அனந்தபுர நகர் புகுதும் என்றே என்று சுவாமி நம்மாழ்வார் மற்றொரு பாசுரத்தால் சாதித்தருளியுள்ளார். ஸ்ரீ கோவிந்தனின் திருநாமம் ஒன்றான கேசவனை மனமுருகி சொல்லிக்கொண்டு இருக்க உபதேசித்தருளேபடி அந்த நாமத்தை சொன்னாலே போதும், இவன் நம்மை கண்டு கொண்டு நம்முடைய குறைகளை தீர்க்க தயாராகி விடுவான். அத்தனை சௌகுமாரிய குணத்தை உடையவன் இவன். இந்த திருநாமத்தை சதா சொல்லிக் கொண்டு இருப்பதாலே கொடிய பாப்பங்கள் அனைத்தும் போய் தொலையும் என்று அருளி செய்துள்ளார் ஸ்ரீ நம்மாழ்வார். கேசவநாமத்தை அர்த்தத்தோടെ உணர்ந்து சொல்ல வேணும் என்றில்லை. துக்கச் சுழலில் உள்ள போது சொன்னாலும், மன நிம்மதியாக இருக்கும் போது இந்த திருநாமத்தையும் சொன்னாலும் கேசவா என்று மனன் நிறைவ சொன்னாலே போதும். தினம் தினம் கொடிய செயல் செய்யும் பணியில் உள்ள யமகிங்கரர்கள் கூட பக்தர்களை நெருங்க மாட்டார்கள். அதுவே யமனின் ஆணையாக உள்ளது. கேசவநாமத்தை நினைவில் எப்போதும் வைத்துக்கொண்டும் துதித்தும் சேவித்தும் எழும் பக்தர்களை அணுகுவது என்பது கிங்கரர்களுக்கு நெருப்பில் தெரிந்து கை வைப்பது போல உள்ளது. இப்பொழுது பிராட்டிமாருக்கு ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அடுத்து பூதேவி தாயாருக்கும் கங்கணத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அத்தனை ஏற்றமுடையது இந்த கேசவநாமம். மற்ற திருநாமங்களை சொல்லுவதாலே உண்டாகும் பலன்களை இந்த ஒரு திருநாமமே நமக்கு அனுகிரகிக்கும், தப்பாது என்கிறார் ஆழ்வார். கொடு வினைகள் நம்மை விட்டு அகலுவதாலே நற்காரியங்கள் மேலே மேலே நடப்பெற அந்த கேசவ கோவிந்த நாமமே பக்தர்களை அனுகிரகிக்கும். வைகுண்ட நாம கிரகணம் அசேஷ அகநாசனம் பெருமானின் திருநாமத்தை சொல்வதாலே அதிலும் கேசவநாம பிரபாவத்தாலே பாபங்கள் மிச்ச மீதமின்றி தீயினில் தூசாகும் என்கிறது. அது சரி, கேசவா என்றழைப்பதாலே பாப்பத்தை போக்கும் ஓர் ஔஷதம் என்று நினைக்க தோன்றும். நிச்சயமே அது ஒரு மருந்துதான். மருத்துவனாய் நின்ற மாமணி வண்ணனான நம் கேசவ கோவிந்தன் இந்த நாமத்தை சொல்லுதலாலே பரம போக்கியமாக இருக்கும். பால் குடித்தால் இனியது, ஜுவரப்பித்தமும் போகும் என்பதை ஆன்றோர்களின் திருவாக்கு. சாதாரணமாக உலக வழக்கில் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்யும் பாப்பங்களை போக்கிக் கொள்ள அவ்வோ திவ்ய தேசங்களுக்கு சென்று பிராயச்சித்தங்கள் செய்வார்கள். இப்பொழுது மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குள்ள கிரமங்களை செய்விக்க அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை அணிவிக்கிறார் மற்றொருவர். அதை அணிந்து கொண்ட அந்த திருவெங்கடவனின் திருவடி வாரத்தில் தலையை பதித்து சேவித்து கொண்டு எழும் இந்த அர்ச்சக சுவாமி பக்தர்கள் பொருட்டு மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்தை துவங்க இவ்விடத்திலே அக்னி குண்டத்தில் பிரவேசிக்க சித்தமாகிவிட்டார். மேலே கிரமங்கள் தொடங்க இருக்கின்றன. அதை சற்று சேவித்து பின்பு எம்பெருமானின் கல்யாண குணத்தை சேவிப்போம். कर्म करिष्ये एतोन्विन्द्रमित्यक्नालकं प्रोक्ष्याम् एतोन्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्नाम् शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धां संशुद्ध आशीर्वान् ममत्वं मगिदेवात्र विनमागजन्तां मय्याशीरस्तु मगिदेवहूतिः दैव्या होतारामनिषन्त पूर्वेरिष्टास्यामतनुवासुवीराः मह्यं यजन्तमुमगानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचतामे उत्थन्यमानमस्या अमेध्यमपपाप्मानै यजमानस्य हन्तु शिवानः सन्तु प्रतितश्चतस्रश्चिन्नो माता पृथिवीतोकसातां जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो गच्छ निष्कते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमीगर्भार्जनगन्योमयो भूः उपावरोह जातवेदः पुनस्त्वं देवेभ्यो हव्यं वहन प्रजारन् अग्न आगाहि वीतगे गृणानो हव्यदातगे निहोता सत्स्य बर्हिषीं कर्मणेवां देवेभ्यः शकेगम् अदितेन मन्यस्वाम् अनुमतेन मन्यस्वाम् सरस्वतेन मन्यस्वाम् देवसवितप्रसुवां तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेमदः सुरुचो वेन आवह स बुद्धिगा उपमा अस्य विष्ठा सुतश्च गो नमसतश्च विवह ओं ब्रह्माणमवाहगामि प्रजापतिमावाहगामि पितामहमावाहगामि हिरण्यगर्भमावाहगामि ब्रह्मणे नमः इदमासनम् सोमोधेनुगुं सोमो अरवन्तमाशुगुं सोमो वीरङ्कर्मण्यं दधातुं साधन्यं विदत्यगुं सभेगं पितुश्रवणय्यो ददासु तस्मै ओं सोममावाहगामि इक्राङ्गमावाहगामि इन्दुमावाहगामि चन्द्रमावाहगामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि
ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्तयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञै यजमानञ्चदेः ॐ प्रोक्षां दिवे त्वाम् अन्तरिक्षागत्वां पृथिव्यै त्वाम् पोषागत्वाम् उपाभ्यां देवसवितप्रहरेमवीतगे पूषा ते ग्रन्थिं विश्कतो आदित्यव्यञ्जनमसीम् ऊर्णामृतसन्त्वास्तृणामि स्वाधस्थं देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतपदीच्यैर्युञ्जनमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतः सौधत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्योऽसि देवेभ्यः शुन्धस्वां पृथिव्यापो गृहीष्यामि को वो गृह्णातु स वो गृह्णातु कस्मै वो गृह्णामि तस्मै वो गृह्णामि पोषागवः अनया पृथिव्यापो गृहीष्यामि प्रणितिपात्रयोः ब्रह्माणमावाहयामि सोममावाहयामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि सोमावप्रणेष्यामि यजमानवातं यच्छां प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे गजमानोऽस्तु सप्तर्षीनागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञै यजमानं च देहि ॐ प्रणगां को वो गिनक्ति स वो गिनक्तुम् संविशन्तान् दैवीर्विषपात्राणि देवगिच्कागीं दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि उत्तरप्रणिधौ अग्निशोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुत आवाहयामि रुद्रानावाहयामि अप उपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनमावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनेयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतिगे जुष्टनिर्वपामि इन्द्रागे जुष्टनिर्वपामि अग्नगे जुष्टनिर्वपामि वसुभ्यो जुष्टनिर्वपामि मरुद्भ्यो जुष्टनिर्वपामि रुद्रेभ्यो जुष्टनिर्वपामि अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे जुष्टनिर्वपामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनिर्वपामि आज्यं द्रव्यधिष्ठयामि चरं द्रव्यधिष्ठयामि अग्नेर्ज्योतिरसि समिदसि स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्ष अन्तरिता आराधकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ठा आराधकः चित्पति स्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा देवस्त्वा सविता पुनः त्वच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः स्वाहा तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् करसम्पूर्णा वा समिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतज्ञस्पर्शयित्वाम् अभ्यर्च्याम् अक्षताम् आज्यां चरुभिः इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुतगे नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः वैश्वानराय नमः नर्यादसे नमः पङ्क्तिरादसे नमः विसर्पिणे नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वां अनुमतेन मन्यस्वां सरस्वतेन मन्यस्वां देवसवितः प्रसुवां षष्टिशतसहस्रान्वितमक्षयमर्पुतमानगाम् अयन्तगित्म आत्मा जातवेदस्तेनेध्यस्वर्थस्वतेत्थवर्थगतास्मान् प्रजगा पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नात्येन समेधय स्वाहा वागव्यादाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्या ईशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा अपवुपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यः स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनेयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्याम् ॐ भू स्वाहा ॐ भुव स्वाहा भोगं सुव स्वाहा ॐ भूर्भवस्सुव स्वाहा अदितेन्वमग्गस्थाः अनुमतेन्वमग्गस्थाः सरस्वतेन्वमग्गस्थाः देवसवितप्रासावीः ॐ भूः श्री श्रीवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कृताम्
ఆఘారాంతే సర్వదోష ప్రాగశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్యేం అదితేన మన్యస్వాం అనుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వాం దేవసవిధ ప్రసువాం ఓం అతో దేవావంతనాగతో విష్ణుర్విధక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహాం ఇదం విష్ణుర్విధక్రమే త్రేధా నిదధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహాం త్రీణి పదా విధక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారయన్ స్వాహాం విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వృతాని వస్పశే ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహాం తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరయः దివే వదక్షరాదగ్స్వాహాం తద్విప్రాసో విపన్యవోచాక్రమాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదక్స్వాహాం ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం సువస్వాహాం ఓం భూర్భవస్సువస్వాహాం అదితేన్వమక్కస్థాః అనుమతేన్వమక్కస్థాః సరస్వతేన్వమక్కస్థాః దేవసవితః ప్రాసావీః. పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము. కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగి కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము వీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము. వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు ఆడరు పాడరు అప్సరో గణము. అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం
अथ भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिनारायणस्य अचिन्त्या परिमितशक्त्या प्रियमानस्य महाजलौघस्य मध्ये परिभ्रममानानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे पृथिव्यप्तेजो वागव्याकाशहङ्कार महदव्यक्ताख्य सप्तावरणीरावते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्ति श्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिक्कजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानामधोभागे महानालागमानस्य फनिराजस्य शेषस्य सहस्रफना मणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीकवामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिक्दन्ति शुण्डादण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवतीति अष्टदेवपुरी विराजिते इन्द्राग्नियमनिरुतिवर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोकालोकाचलवलयिते लवनेक्षुसुरा सर्पिरदधि क्षीरशुद्धोदकाख्य सप्तार्णव परिवृते जम्बोप्लक्ष कुशक्रौञ्च शाकशाल्मलिपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपते महेन्द्रमलय सख्य सुक्ति मधुक्षवत्विन्ध्य पारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजिते भारत किं पुरुष हरीलावृत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकरमणक कुरुवर्षाख्य नववर्षाणां मध्ये भरतवर्षे भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटि योजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बोद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापति क्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समभूमध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेङ्कटाचले मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्थकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातकादि समस्त दुरितक्षयार्थं दश पूर्वेषां दशापरेषां मद्वंश्यानां मातृवंश्यानां सर्वेषां पितॄणां श्रीहरिलोके निवाससिद्ध्यर्थं त्रिगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वमेधादीं शतक्रतु पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सागुज्यमिति चतुर्विध मोक्ष फलसिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थं श्री विखनो मुनीन्द्र मतानुसारिभिः भृक्वादिभिः मन्वादिभिः वसिष्ठादिभिः दिव्य महर्षिभिः उक्त गृह्य धर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादिता कन्यादान कल्पोक्त सकल फलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनंत कल्याण गुणगण गांभीर्यस्य दिव्यमंगल विग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शार्ंगादि पंचागतधरस्य कोटि सूर्य प्रकाशस्य श्रीमतो वैकुंठनायकस्य श्रीमत् वैखानस भगवच्छास्त्र प्रकारेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य पंचविध व्यूह विभेदेन प्रवर्धमानस्य परतत्व विभव व्यूह अंतर्यामि अर्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणोन्नत्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मणिगण विजृंभित पादार विंदस्य अर्चावतार रूप भगवत प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाज त्रयार्षेग प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूरां दिव्याभरणभूषितायां दिव्य कौस्तुभालंकृतायां दिव्य पीतांबरधरायां
दिव्यमाल्योऽभिशोभितायां प्रपन्नपारिजातायां निजावतारायां स्वर्णगरुडवाहनारूढायाम् अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनां स्वभावलावण्यतेजोरत्नाकरायाम् अखिलशाखात्यागिनो अखिललोकपवित्रायां श्रवणनक्षत्रे मकरराशौ जातायां श्री श्रीनिवासस्वामि परब्रह्मणे वरायाम् ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं भार्गवच्यवन आप्रवान और्ववैदल पञ्चारुषेय प्रवरान्वितां भार्गवस गोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनयां भार्गवीं श्रीदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्वण सकलवेदाध्यागिनीं काश्यप आवत्सारणीत्रपत्रिकारुषेय प्रवरान्वितां काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवित पादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जातां कश्यप प्रजापते सङ्कल्पतनयाम् इमां भूदेवी नाम्नीं कन्यां वृणीमहे वृणीत्वं दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषगां कन्यां सलङ्कृतां साध्वीं सुशीलाकसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु பிராட்டி எம்பெருமான் திருமுன்பாக பிராட்டிமார்களுக்கு சார்த்த இருக்கும் அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு உரிய கிரமங்களை அர்ச்சக சுவாமி ஆகம முறைப்படி செய்ய கொண்டிருக்கிறார். மேலே எம்பெருமானின் சௌக்குமாரியத்தை சற்று சேவிப்போம். அதில் திருநாம பிரபாவத்தில் கேசவநாமத்தின் உயர்ந்த அந்த நிலையை சொல்லுவதால் ஏற்படும் பலன்களை சற்று சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதை தொடர்ச்சியாக மேலே சேவிப்போம். கேசவநாமம் இவனுக்கு உண்டானது. பாப்ப கூட்டங்களான அரக்கர்களை அழித்து நம்மை காத்து ரட்சிக்க வேறு எளிதான வழி உண்டா என்ன? இந்த கேசவநாமத்தை ஜபிப்பதால் உண்டாகும் நன்மை முன்னும் அனைத்து பாப்பங்களும் கழிகிறது என்கிறார். யஸ்மாத் த்வயைவ துஷ்டாத்மா ஹதக கேஷி ஜனார்தன தஸ்மாத் கேசவநாமா த்வம் லோகே கியாதோ பவிஷ்யசி என்று விஷ்ணு புராணத்தில் கேசவநாமத்தின் ஏற்றத்தை சொல்லுகிறது. இந்த நாமத்தை சொன்ன மாத்திரத்திலேயே அனைத்து பாப்பங்களும் தீயினில் தூசாகும் என்பதை அனுபவ பூர்வர்களான ரிஷிகள் ஆச்சாரிய சார்வபௌமர்களின் உயர்ந்த திருவுள்ள கருத்தாக அமைந்துள்ளது. இவை அனைத்தும் பிரபன்னஜர கூட்டஸ்தராம் ஸ்ரீ நம்மாழ்வாரின் ஈரச் சொற்களுக்கு உள்ள உயர்ந்த பிரமாணமாக அமைந்துள்ளது என்று நன்றாக நாம் தெளிவடையலாம். இப்படிப்பட்ட எம்பெருமான் கேசவ நாமத்தை நாம் ஜபித்து கொண்டே இந்த திருக்கல்யாணத்தை நன்றாக சேவித்து அவரவர் மன அபீஷ்டங்கள், அதாவது குறைகள் விளங்கி மங்கள பலன்களை மேலும் பெறும்படியாக கண்டோம் 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 கண்ணுக்கு இனியன கண்டோம் தொண்டீர் எல்லீரும் வாரீர் தொழுது தொழுது நின்றார்த்தும் மண்டார் தன்னந்துழாய் மாதவன் பூதங்கள் மண்மேல் பண்தான் பாடி நின்றாடி பறந்து தெரிகின்றனவே என்று மற்றொரு பாசுரத்தாலே சுவாமி நம்மாழ்வார் எப்படி இதை காண்பதாலே திருநாமத்தை சொல்ல முடியாவிட்டால் இவனை கண்டு தொழுதால் போரும் அல்லவா, அதையும் சாதித்தருளியுள்ளார். இந்த பகவத் சம்ருத்தியை கோஷ்டியை கண்ட ஆழ்வார் தான் அனுபவித்ததைப் போல மற்றும் பல அனுகூலர்களையும் ஆதரத்தோடு அழைக்கின்றார் இப்பாடலால் இப்பாசுரத்தால். மெய்யடியார்கள் ஈட்டங்கண்டிட கூடுமேல் அது காணும் கண் பயனாவதே என்றும், அதாவது திருநாமத்தை சொல்ல முடியாதவர்கள் கூட கண்களால் கண்டு இந்த பலனை பெறலாம் என்பதற்கு இதன் அடிப்படையான பொருளாக அமைகின்றது. பேராளன் பேரோதும் பெரியோரை ஒரு காலம் பிரியிலேனே என்றும் பாகவத கோஷ்டியின் பெருமைகளை உணர்ந்தவர்கள்
ஒருவர் தப்பாமல் உடனே வந்து கூடி இருந்து குளிர அனுபவிக்க ஆழ்வார் அழைப்பு விடுக்கின்றார் இந்த பாசுரத்தால். யாரை தொழ ஆழ்வார் அழைப்பை விடுகின்றார் என்றால், திருவுக்கு திருவான அந்த கேசவனை மணாளனையும் அகலாத திருவான அலர்மேல் மங்கையும் மிதுனமாக அடியார்களை நோக்குகின்ற அந்த திவ்ய திருஷ்டியன் படியையும் கண்டு மகிழ்ந்த அடியார்கள் நல்ல இசைகளிலே கோவிந்த நாமத்தையும் கேசவ நாமத்தையும் இட்டு பாடி தொண்டர்கள் கொண்டாடி தொழுது நிற்கின்றனர். அதை காண முடியாதவர்கள், கேட்க முடியாதவர்கள் கூட உணர்ந்து நன்றாக பலனை பெறலாம் என்பதே ஆழ்வாரின் உயர்ந்த கருத்தாக இந்த பாசுரத்தாலே அமைந்துள்ளது. இப்பாசுரத்தால் ஒவ்வொரு பாசுரத்திலும் வேதாந்தங்கள், அதை தொடர்ந்து ரிஷிகள், அவர்களை தொடர்ந்து ஆழ்வாரின் பாசுரங்களாலே எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண குணங்களையோ அவன் திருநாமத்தை சொல்வதால் ஏற்படும் பலன்களையோ நன்றாக விளக்கிச் சாதித்துள்ளார்கள். வெறுவாத்தாள் வாய் வெறுவி வெங்கடமே வெங்கடமே என்கின்றாளால் மறுவாளால் மன்னிக்க வேண்டும். வெறுவாத்தாள் வாய் வெறுவி வெங்கடமே வெங்கடமே என்கின்றாளால் மறுவாளால் என்குடங்கள் வாழ்நெடுங்கண் துயில் மறந்தாள் வண்டார் கொண்டல் உருவானாள் வானவர் தம் உயிராளன் ஒலி திரை நீர் பவ்வம் கொண்ட திருவாளன் என் மகளை செய்தகள் எங்கனம் நான் சிந்திக்கேனே என்கிறார் திருமங்கையாழ்வார் மற்றொரு பாசரத்தாலே. அதாவது அவன் நாமத்தை சொல்ல வேண்டும், அவனை நினைக்க வேண்டும் என்று. அப்படி இல்லாவிடில் இருந்த இடத்திலேயே அந்த மலையும் திருமலை அப்பனையும் நினைந்து தொழுதாலே போதும் என்கிறார் மற்றொரு பாசுரத்தாலே. இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி எம்பெருமான் திருக்கரத்தாலே சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த திருமாங்கல்யத்தை பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். இப்பொழுது திருமாங்கல்யத்தை பிராட்டிமார்களுக்கு திருமுன்பு சமர்ப்பித்து உரிய கிரமங்களை செய்து கொண்டிருக்கின்றார். மேலே ஓம் பிரஜாபதிः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदान्वसृत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुनाम् कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. ओम प्रजापतिः सोमगुं राजानमसृजताम् तन्त्रयो वेदान्वसृत्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुताम् अतः सीता सावित्रीम् माङ्गल्यं तन्तुनानेन लोकरक्षणहेतुनाम् कण्ठे बध्नामि शुभगे रक्षध्वं भुवनत्रयम् भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु. கல்யாண வேதிகா వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పూయా
నతడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగామతి అశోన్యోపస్థా దేవతామస్తు మాతా పౌత్రమానందమపి ప్రబుధ్యతాం మియగ్గ స్వాహాం చిత్తం చ స్వాహాం చిత్తిశ్చ స్వాహాం ఆకోదం చ స్వాహాం ఆకోదిశ్చ స్వాహాం విజ్ఞాతం చ స్వాహాం విజ్ఞానం చ స్వాహాం మనశ్చ స్వాహాం శక్వరీశ్చ స్వాహాం దర్శశ్చ స్వాహాం పూర్ణమాసశ్చ స్వాహాం బృహచ్చ స్వాహాం రథంతరం చ స్వాహాం ఓం భూ స్వాహా ఓం భవ స్వాహా ఓం శుభ స్వాహాం ఓం భూర్భవస్సువస్వాహాం అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీవాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ లాజహోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్యాం ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంత సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం నాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంచ సంవననాం తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయం నార్యుపప్రోతే క్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాదురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భవస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భవస్సువస్వాహ అదితేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కృత సర్వహోమాంతే సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదివైష్ణవాహుతిర్హోష్కే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం అతో దేవా అవంతు నోగతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తధామ విస్వాహాం ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధాని దధే పదం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహాం త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ స్వాహాం విష్ణోః కర్మాణి పుష్కతగతో వృతాని పుష్పజేం ఇంద్రస్య యుజ్యः సఖా స్వాహాం తద్విష్ణోః పరమం పదకం సదా పుష్కంతి సూరగः దివి వచక్షురాదదగ్గ స్వాహాం తద్విప్రాసో విమన్యవోజాక్రవాకం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహాం ఓం భూస్వాహా ఓం భవస్వాహా ఓం శుభస్వాహా ఓం భూర్భవస్సువస్వాహాం అతిథేన్వమగ్గస్థాః అనుమతేన్వమగ్గస్థాః సరస్వతేన్వమగ్గస్థాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సవకర్మాంగం ఔపాసనాగ్నౌ కర్మ సాత్పుణ్యార్థం ఉపరిష్టాదంత హోమం హోష్కేం అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసువాం ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరితం యత్వాన్యోన విహాకరం అగ్నిష్ఠత్స్విష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్గస్విష్టకం సుహృతం కరోతి స్వాహాం అగ్నగే స్విష్టకృతే సుహృత హుతాహుతీనాం కామానాగం సమత్నగిత్రే స్వాహాం అగ్నగే స్వాహాం అగ్నగే నాదాగ స్వాహాం అగ్నగే నపతగే స్వాహాం ప్రజాపతగే స్వాహాం ఇంద్రాగ స్వాహాం ఇష్టేభ్య స్వాహాం వషడనిష్టేభ్య స్వాహాం భేషజం దృష్ట్యై స్వాహాం నిష్కృత్యై స్వాహాం దౌరార్ధ్యై స్వాహాం దైవీభ్య స్వాహాం తనోభ్య స్వాహాం రుద్ధ్యై స్వాహాం సమృద్ధ్యై స్వాహాం సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహాం యథోస్యేది శ్రీమహి స్వాహాం
समिदसि तेजोसि तेजोमगिते स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वागोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रगाणीं सप्तहोत्राः सप्तधात्वागतन्ति सप्तगो नीराप्रणस्वा घृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा त्योर्भुक्तग् स्वाहा पृथ्वीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा त्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथ्वीजीर्णग् स्वाहा ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव जीर्णग् स्वाहा ॐ ऋतधानधित्वा वनष्टभृतेन पूर्णमाहुतिञ्जहो विमनसा प्रजापतये स्वाहा आद्यशेषमिन्द्रागजहो विस्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीस्तृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तामतिदेन्वमक्कस्थाः अनुमतेन्वमक्कस्थाः सरस्वतेन्वमक्कस्थाः देवसविधप्रासावीः आवाहि देवताभ्यो नमः यथा संविधास्थानं प्रवेशगामीम् अक्षितमक्षत्यैजहोमीम् अक्षितमसि मामे एक्ष्ठेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणागां प्रतीच्यां उदीच्यां ऊर्ध्वागां अधरागां मार्जयन्तां पश्चिमतः परधिवपनगाम् पश्चिमतः परधिवपनगां दक्षिणतः परधिवपनगां उत्तरतः परधिवपनगां पश्चिमतो विष्णोः सदनमसीं दक्षिणतो विष्णोः सदनमसीं उत्तरतो विष्णोः सदनमसीं प्राच्यां विष्णोः सदनमसीं सर्वारण्यान् परिसमोक्यां कोर्चाश्चेति ग्रन्थिं विसृज्याम् अपवुपस्पृश्याम् अद्भिप्रोक्ष्याम् आप्यागन्तामिति जुहोतिम् आप्यागन्तामाप ओषधयो मरुतां पृषदिगस्थदिवं गच्छततो नो वृष्टिमेरगस्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः भूतिस्माते लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तगोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः प्रगागुषं जमदग्नेः कस्य वश्कत्रगागुषं यद्देवानां प्रगागुषं तन्मे अस्तु प्रगागुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्तते प्रगागुषम् आपोहिष्ठामयो भवस्तान ऊर्जेत धातनां महेरणागचक्षुषे योवश्यवतमोनसस्तस्य भाजगते हनः पुषदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमामभोगस्य क्षगागजन्वधाम् आपो जनगथा जनः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशनां यद्धदन्तमगादेव परिपूर्णं तदस्तुते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परं कागेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणागेति समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः पुनः पात्यर्घ्यागमनं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुणोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं समर्पयामि आज्योपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु।
பூர்ணாகுதிக்கு பிறகு திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்கும் பிறகு திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காய் உருட்டும்படியான இந்த கிரமத்தை அர்ச்சக சுவாமி மற்றொருவரிடம் தொடர்ந்து செய்ய இருக்கின்றார். ஆக இந்த திருநாமத்தையும் திருவேங்கட மலையையும் திருவேங்கடவாணனையும் நன்றாக சேவித்து மகிழும் அன்பவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று திருமங்கை ஆழ்வாரின் பாசுரத்தின் மூலம் அதன் பலன் என்ன என்று நாம் சேவித்தோம். இந்த தலத்தின் திருவேங்கடத்தின் திருநாமத்தை சொன்னாலாவது திருவேங்கட மலையின் திருநாமத்தை சொன்னாலாவது தன்னை காண வருவானா என்று தாம் படும் பாட்டை தம் வாயால் ஆழ்வார் சொல்லாது தன் தாயார் சொல்லாக சொல்லும் பாசுரம் பரகால நாயகியான ஆழ்வார், அதாவது திருமங்கை ஆழ்வார் திருவேங்கடம் திருவேங்கடம் என்று வாய் புலம்பினவாறு இருக்கின்றது. ஓயாத அலைகள் சப்தமிடும் பார்க்கடலிலே பிறந்த மகாலட்சுமி பத்மாவதி தாயாரின் வல்லபனான திருவேங்கடவனின் நினைப்பாலே தன் மகள் தவிக்கும் அந்த தவிப்பை கண்டு, அதாவது பரகால நாயகியை கண்டு தாயார் துக்கித்து போவதாக சொல்லுகிற லக்ஷ்மிபதியான வேங்கடவாணன் இப்பொழுது பிராட்டி எம்பெருமான் அணிந்து கொண்ட மாலையை பிராட்டிமார்களுக்கு அணிவித்த மாலையை மீண்டும் வேங்கடவாணனுக்கும் அணிவிக்கும்படியான மாலை மாற்றல் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. மங்களமான இந்த மாலை மாற்றல் திவ்ய தம்பதிகள் மாலை மாற்றலுக்கு பிறகு சேர்த்தியிலே தலம்மராறு, அதாவது அக்ஷதை பரமாற்றங்கள் நடக்க இருக்கின்றது. வேங்கடவாணனின் திருநாமத்தையும் அவன் எழுந்தருளியிருக்கும் திருவேங்கடமலையின் அந்த திவ்ய நாமத்தையும் சொல்லுவதாலே அனைத்து பலன்களையும் பெறலாம் என்பதை ஆழ்வாரின் பாசுரத்தின் மூலம் பரக்கால நாயகியாம் இந்த ஆழ்வார் ஒரு பொருட்டாக இல்லையோ என்று பகவானுக்கு தோன்றிற்றாம். அப்படியாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். திருவேங்கடவாணனை பற்றி நினைந்து கழிக்கும் அநேக பக்தர்கள் இருக்கின்ற போது பரகால நாயகி ஒரு பொருட்டாக வேங்கடவனுக்கு படவில்லையோ என்று பிரார்த்தித்தபடி அத்தனை துக்கம் வந்துவிட்டது ஆழ்வாருக்கு. ஸ்ரீனிவாசன் பக்தர்களின் ரட்சகத்திற்கு ஆகவன்றோ வலம்புரி சங்கையும் திருவாழியையும் திரண்ட தோளில் உடையவனாக இருக்கின்றான். அதுவன்றோ அவனுக்கு அத்தனை வாத்சல்யம் சௌக்குமாரியம், அவர்களை ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற சௌக்குமாரிய குணம் அவனுக்கு ஓங்கி இருக்கின்றது. அவன் எழுந்திருக்கும் மாலை எத்தனை உயரமோ அத்தனை உயரமானது இவனுடைய கல்யாண குணமும். இத்தகைய நீர்மையினால் ஏற்றமுடையவன் தன் மகளை நினையாது, அதாவது பரகால நாயகியை நினையாது எதற்கு என்ற தாயார் புசரமாக அமைந்துள்ளது. இப்படிப்பட்ட ஏற்றமுடைய திருமலை, அதில் நித்தியம் முறையும் பேசும் தெய்வமான திருவேங்கடமுடையான், திருவேங்கடமலைக்கு ஒப்பான க்ஷேத்திரம் பிரம்ம சிருஷ்டியிலும் இல்லை என்று வேதமே சொல்லுகின்றது. ஸ்ரீ வெங்கடவனுக்கு இணையான தெய்வமும் இல்லை, இனி உண்டாகப் போவதும் இல்லை. ஏனெனில் பகவான் உகந்து எழுந்தருளிய தலம், அவனை மீறி எதுவும் நடந்தேறாது. இப்பொழுது தலம்பராலு என்னும்படியான அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் திவ்ய தம்பதிகள் சேர்த்தியிலே நடக்க இருக்கின்றது. அனைத்து பக்தர்களும் நன்றாக பிரார்த்தித்து பலனை வேண்டி பலனையும் பெற வேண்டும் என்று பக்தி சேனல் அனைவரையும் மங்களமாக வாழ்த்தி விடைபெறுகிறது. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ